शायद सभी ने रात भर नहीं जागा, खासकर जो हमारे व्यूअर्स यहाँ इंडिया में हैं, क्योंकि यार जब एक टेस्ट मैच सुबह के 2:30 बजे तक जाता है, तो जाहिर सी बात है कि भाई हार्डकोर क्रिकेट प्रेमी भी 2 बार सोचेगा यार, क्योंकि अगले दिन जॉब है, उठना है, काम करना है। बट अगेन इट इज व्हाट इट इज, इट्स व्हाट वी गेट व्हेन वी स्टे अप टू वॉच क्रिकेट इन द वेस्ट इंडीज। एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे याद है कि जब मैंने अपनी मीडिया करियर शुरू की थी 2005 में, तो मैं उस समय क्रिक इन्फो में पे मैंने शुरू किया था। तकरीबन 4.5 5 साल में वहां पर था। और इनिशियली हमें बहुत वो मैच रिपोर्ट्स लिखने थे, और खासकर बॉल बाय बॉल, यानी कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री, जो आप मैच देख के आप कमेंट्री टाइप करते हो। तो वी टू ड्रेड इंडिया टुवर्ड्स द वेस्ट इंडीज, बल्कि एनी टीम इन द वेस्ट इंडीज, बिकॉज एज अ ग्लोबल क्रिकेट साइड हमें सारे मैचेस कवर करने थे, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। तो बहुत बहुत बार दोस्तों मुझे याद है, हम लोग पूरी रात भर, मैं, मेरे दोस्त श्रीराम वीरा, कभी सिद्धार्थ मोहंगा, और भी थे, हमारे स्कोरर्स थे वेंकट राघव, राजू, साजन नायर, कनिष्का बालाचंद्रन, बहुत लोग थे उस समय। एंड आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू ड्रेड यार कि भाई जो टेस्ट मैच 7:30 बजे शुरू होता है और रात को 2:30 बजे जाएगा, उसके बाद मैच रिपोर्ट लिखो, बाकी काम, क्योंकि आपको वेबसाइट चलाना है, वो भी क्रिक इन्फो जैसे वेबसाइट। तो वी यूज्ड टू ड्रेड दीज, एंड सिटिंग हियर नाउ इन माय अर्ली 40s, लॉन्ग लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव लेफ्ट क्रिक इन्फो। यार वो दिन हाँ मुश्किल थे, लेकिन हम प्रॉपर क्रिकेट प्रेमी थे। दैट टाइम वी वर यंगर, और हमें, हमारे अंदर इतना पैशन था फॉर द गेम। बट यू नो व्हाट इज एक्चुअली वर्स देन कवरिंग अ क्रिकेट मैच इन वेस्ट इंडीज फ्रॉम इंडिया? न्यूजीलैंड वाले मैचेस। वो न्यूजीलैंड वाले मैचेस दोस्तों सुबह 2:30 3 बजे शुरू होते थे। क्या है कि अगर आपको 6:30 बजे शिफ्ट पे आना है, और 7:30 से लेकर 2:30 तक, 3 तक आपको काम करना है, मुश्किल है। लेकिन इन कंपैरिजन, तो न्यूजीलैंड मैचेस यूज्ड टू बिगिन एट 2 o'clock। मतलब उस समय ना तो आप ठीक से सो पाए, ना तो आप ठीक से जग पाए। आप 2 बजे ऑफिस आ रहे हो, ऑफिस कैब में, मैं बैंगलोर की बात कर रहा हूँ उस समय। क्रेजी क्रेजी क्रेजी, बट एक वो दिन था, एक आज का दिन है। आज दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ यशस्वी जायसवाल के बारे में, जो 143 नॉट आउट हैं दोस्तों। चौथा सेशन इनका बैटिंग का चल रहा है। कल यानी कि डे 2, उन्होंने पूरे 3 सेशन बैटिंग करे। डे 1 शुरुआत पे उन्होंने 40 बनाए तकरीबन एक सेशन के अंदर। बट जो पेशेंस दिखाया लड़के ने है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत बहुत सालों से ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि सिर्फ 21 साल के हैं यशस्वी जायसवाल, होनहार बल्लेबाज है तो यूपी के, बट काफी साल से वो मुंबई शहर के लिए खेल रहे हैं, मुंबई इन द रणजी ट्रॉफी। और अगर आप इनका करियर देखें दोस्तों, तो बहुत बहुत मुंबई क्रिकेटर्स, और बहुत नॉट जस्ट मुंबई, बहुत बहुत स्टेट से, बहुत बहुत शहरों से, छोटे बड़े गांव से लोग आ चुके हैं इनसे पहले, जो कि तकरीबन सारे बॉक्सेस को टिक करते हुए इस मकाम तक आए हैं, यानी कि टेस्ट क्रिकेट भारतीय टीम के अंदर आए हैं। एंड टू वॉच हिम गेट दैट 100, टू बैट वेरी वेरी पेशेंटली। सबसे पहले ये तो बोलना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में कुछ ज्यादा जान तो नहीं थी। आई थिंक दे वर फास्ट बॉलर शॉर्ट, शैनन गैब्रियल को नहीं खिलाया। और दूसरी बात ये कि जिस तरह की पिच हमने देखी दोस्तों, ऐसे पिचेस क्यों दे रहे हो आप वेस्ट इंडीज वालों? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? फास्ट बॉलिंग। आपने एक स्लो लो टर्निंग ट्रैक दिया, वेरी वेरी सरप्राइजिंग, एंड आई थिंक दैट रियली सेट बैक वेस्ट इंडीज फ्रॉम बिफोर अ बॉल वाज बोल्ड। उसके बाद जब आप 150 पे सिमट जाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इस इंडियन बैटिंग लाइनअप के सामने। बट लुक, यू हैव टू स्कोर रन्स। पहले दिन के आखिरी सेशन में थोड़ी स्विंग थी, हल्की सी मूवमेंट थी, बॉल थोड़ी उछल के आ रही थी। सो यू नीडेड एप्लीकेशन, यू नीडेड criticism. Sorry, I just read a comment. I'll come to your comment, Pritam. Not criticism, but I'm saying you needed application. और ये प्रॉपर टेस्ट इनिंग्स है। जायसवाल ऐसे खेल चुके हैं, वो तेजी से भी खेल चुके हैं। दिस इज अ गाय who's got, he's got hundreds at a strike rate of of about 100 plus in first class cricket. But this was the correct way to remind people कि भैया हाँ, मैं इस एरा का, इस जमाने का मैं एक स्ट्रोक मेकर हूं। मैंने हाल ही आईपीएल में 13 गेंदों पर मैंने 50 मारा, बट आई डू हैव द क्रेड, आई हैव द चॉप्स टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। और यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से झंडा गाड़ के, इनको मालूम है, टीम को मालूम है कि भैया हमें एक बार बैटिंग करनी है, और हमें इतने रन बनाने हैं कि उस रन के दबाव में वेस्ट इंडीज की टीम तीसरे दिन पर, या शायद चौथे दिन लंच से पहले वो निपट जाए, क्योंकि बॉल घूम रही है। रकीम कॉर्नवॉल जैसे स्पिन बॉलर को खेलना बहुत मुश्किल था कल। रोहित शर्मा ने स्ट्रगल किया, जायसवाल ने स्ट्रगल किया, उनको ज्यादा डोमिनेट नहीं कर सके। तो जब रकीम कॉर्नवॉल
ऐसी गेंदबाजी करके भारतीय बल्लेबाज को थोड़े परेशान नहीं कर रहे मैं कहूंगा, बट वो थोड़ा उनको रोक के रखा हुआ है। तो आप सोचिए कि अश्विन और जडेजा क्या करेंगे। इंडियाज मैंडेट बैट वंस बैट बिग, और इसी टेम्पलेट को लेकर मुझे फिलहाल तो कोई शिकायत नहीं है कि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पूरा टाइम लेके समय निकाल के, दिस इज टेस्ट क्रिकेट, बहुत बहुत समय होता है आपको स्लैम बैम क्रिकेट खेलने के लिए। आई वॉज वेरी वेरी इंप्रेस्ड विथ यशस्वी जायसवाल। उन्होंने किसी भी समय पर जल्दबाजी नहीं दिखाई। इनको झंडा गाड़ना था, इनको पहला टेस्ट शतक अपनी पहली पारी में हासिल करना था। एंड ही गेव रिस्पेक्ट टू द गुड बॉल्स, ही सेट हिज टाइम आउट। इट वाज अ रिस्क फ्री गेम। शायद उनके मन में आया कि यार इस बॉलर को मारो, इस ओवर पे मारो, जल्दी से 100 तक मारो। नहीं, जो गेंद मारने लायक थी उन्होंने उस गेंद को मारा, जो गेंद मारने लायक नहीं थी उस गेंद को उन्होंने सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, और उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा, झंडा गाड़ के अभी 143 नॉट आउट, 350 गेंदे दोस्तों, 350 गेंदे इस 21 साल के लड़के ने खेला। वही लड़का जो आईपीएल में इतने बड़े रन, इतने तेज रन बनाकर इनका नाम बना है, उसी लड़के, उसी यशस्वी जायसवाल ने। और यहां पे इनकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने फॉर्मेट बदल के एक प्रॉपर टेस्ट ओपनर की तरह खेला। दिस इज माई व्यू, आई होप यू अग्री। सुबोध छावन ने मुझे कुछ समय पहले ट्वीट किया था कि भैया आप लाइव पे आ रहे हो, मैं आ गया। रोहित शर्मा की फिटनेस पे सवाल करते लोग, बंदा कभी 5 दिन के टेस्ट मैच में बीच में छोड़ नहीं देता, इस इफेक्ट नहीं, मैच फिटनेस देखनी चाहिए। रोहित शर्मा क्या 100% फिट है? लगता नहीं है इनकी शरीर को देखकर, लेकिन जब आप इतनी गेंदें खेल के आप 100 मार सकते हो टेस्ट मैच में, तो आई थिंक आपकी फिटनेस इस फॉर्मेट के लिए या इस टीम के लिए ठीक ठाक है। हाँ जरूर, आगे इनकी उम्र 36 साल के हैं, इंजरी प्रोन है, कभी भी तीन तीन सीरीज लगातार नहीं खेलते हैं, दो के बाद इंजर्ड हो जाते हैं या रेस्ट हो जाते हैं। शायद ये इनकी स्टेटस के साथ ये सारे ऑप्शन आपके पास आते हैं, बट आई वुड लाइक टू सी हिम गेट अ लिटिल बिट ट्रिमर। होता क्या है, अगर आप पूरी तरह से फिट नहीं हो तो आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। आप पुल शॉट इतने अच्छे नहीं मार सकते हो, आप कट शॉट, अब इसलिए आप हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स इतने अच्छे से नहीं मार सकते हो। बट टू हिज क्रेडिट, ही इज बैटेड अ लॉट। It was a slightly tough conditions now and then against a rather weak bowling attack. But I think if Rohit Sharma can bat that long and score his 10th 100, fitness is not as bad as it seems. Welcome back, Ashutosh. Do you think we should keep Shubman Gill as number 3 for the whole WTC cycle? Good question. Let me have a sip of coffee first. Yes, he looked good, but again, Shubman Gill often looks good. He just didn't get set. Look, it's a good question, Ashutosh. I would answer it this way. This is a time for experimenting. This is a time for transition. If you have decided, or Shubman Gill has decided, because we heard him say, we heard Rohit Sharma say that he went to the coach and said, कि मुझे 3 पे खिलाओ. I would not want to see Shubman Gill bat 3 for one test or even this series, and then 6 months later in South Africa have someone else. If you want to experiment, then experiment cannot be on a match by match or even a series by series basis. This West Indies tour is just for 2 test matches. The South Africa tour, very oddly, is also Ashtosh just for 2 test matches. If you think Shubman Gill's future is in the middle order, maybe 3 until Virat Kohli retires or until a more viable number 3 presents himself, then let him bat at 3 for sustained period of time. Abhi, 5 महीने का gap है between India's test series. That's not in your hand. आप उसे control नहीं कर सकते हो. Let, if you've given him this chance, if he wants to bat at 3, give him the West Indies series, give him the South Africa series. That means you're giving Jaiswal 2 series, यानी कि 4 test match to open. You're continuing with Rohit as an opener, and then 5, 6, 7, you have your options. I would not want to see, just to underline my point again, Ashutosh, I would not like to see Jaiswal shifted from 3 after 1 or 2 series. Give him 2 series, give him 6 test matches. Maybe those 5 test matches at the start of next year against England and India, maybe there, if it's not working, maybe there you change him. If he bats well at 3, if he shows consistency, I'm all for him batting at 3 for the next 2 years. But do not chop and change so quickly. Pritam, yes, I feel criticism. Yash for scoring against West Indies uncalled for. He batted beautifully. Absolutely. Look, he's 21-year-old. He's come through a hell of a lot. We've heard his stories. I don't want to get into that because I think that's just one part of it. He has ticked off. 21 साल की उम्र में यशस्वी जायसवाल अगर टेस्ट टीम में आ चुके हैं, अगर अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं, he has every right to play the way he wants to play. Yes, you can say the bowling was not as strong. He's going to be faced with much tougher bowling in South Africa 6 months down the line.
but you have to score runs, right? इंडिया के इतिहास में कितने प्लेयर खेल चुके हैं? 300, तकरीबन 350 के आसपास टेस्ट क्रिकेटर्स खेल चुके हैं। सिर्फ 17 ने सेंचुरी बनाया डेब्यू पे। यशस्वी जायसवाल उस लिस्ट में आ चुके हैं, उस एलीट क्लब में आ चुके हैं। हैट्स ऑफ टू हिम, यू हैव टू स्कोर रन्स एंड ही स्कोर्ड डैम गुड रन। सो आई एग्री विद यू प्रीतम। शिखर सिंह, जय भाई, रोहित शर्मा की फिटनेस का इनकी फ्लुएंसी कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वी डिस्कस्ड दिस शिखर भाई a lot about his fitness, and like I said, your reflexes slow down. He's had a tough time in T20s. He's been inconsistent in Test cricket. Let's hope this 10th hundred against West Indies proves a bit of a turning point, because the fact is Rohit Sharma के पास शायद 2 ही साल बाकी है as a Test cricketer. Hello Kamal, good morning. I would rather have this than whole team get out 70 runs. बिल्कुल देखो, Indian team is not going to get out for 70. 36 all out at Adelaide was a once in a generation experience. वो दोबारा नहीं होगा. So yeah, not going to happen. Satej, that's a new name here. Welcome, Satej. What's your prediction on Jaiswal's score? Dekhi, I was going to put something in this video headline about double century loading, but I don't want to speak too much. Jinx hota hai bahut. But look, he's set. He's played 350 deliveries for a 21-year-old whose natural game is to attack. Imagine the kind of patience, self-control जो यशस्वी जायसवाल ने दिखाया है अपने डेब्यू इनिंग्स पर। 350 गेंदें खेलकर, 4 सेशन खेलकर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 200 तक पहुंचे, क्योंकि पीछे बैटिंग बैटिंग बहुत है। और मेरा ये मानना है कि इंडिया 2 सेशन तो बैटिंग करेगी तीसरे दिन पर। Shanawaz bhai, yesterday I've seen Jaiswal in Geo Cinema. Yes, we've all seen that. Good morning, Prabhakar. Pritam, why do you think VK is playing slow? He's trying to score big to improve his average. Look, Virat Kohli needs to get runs. We know for the last 4 years, a player of his stature is averaging 28. That, to my mind, is unacceptable. I don't think he should be in India's 11 right now on the basis of 4 years of an average of 28. But it's not about me. In India, unfortunately, the status is bigger than the team cause. I'm all for Virat Kohli scoring runs. If he feels he needs to settle down, by all means, do it. But, Preetham, it's not the first time we've seen Virat Kohli settle down. Is this 36 going to become 100, or is it going to end in 49, 63? अगर विराट कोहली ने इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से अपने आप को सेट किया है, एक बेस स्थापित कर लिया है, he needs to now against this West Indies attack get 100. Nothing less than 100 in my books will be acceptable from विराट कोहली। जब रोहित शर्मा ने फिटनेस के चलते, खराब फॉर्म के चलते 100 मारा, जब यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू पे 100 मारा, अगर इस मैच में विराट कोहली 100 नहीं मारते, he'll have to be very, very embarrassed about his current batting form. Yes, this test match is a mismatch, Kiran. Can Atit Sheth and Raj Bauer be good contenders? Atit Sheth doesn't have pace, so I don't think he's going to ever get into that India's top elite club. And Raj Baba is too young. I think Raj Baba. See, with every under 19 player, you need to have them play at least 2 seasons of first class cricket. The very rare, the very once in a lifetime batsmen, Prithvi Shaw, Shubman Gill, Jaiswal, उनको कभी कभी 19-20 की उम्र में चांस देते हैं. But Atit Sheth, from what I've seen him play in a couple domestic matches. Look, he's got good stats. He's helped win matches for his team. He's gone to India A, did well for India A also. But I just don't think he's international quality, with no disrespect. And Raj Bawa, I just not seen enough. He's very young. अभी तो 19 साल के हैं, थोड़ा time दो उनको. Stint in county. Look, Sheffield Shield. No Indian player has gone to Sheffield Shield. County. At least now the BCCI in the last few years is sort of warming up. But until the BCCI relaxes its stringent rules against players going overseas, these younger players are very, very far behind that line. Hello, Nihar. रोहित शर्मा is still best opener in test in world cricket. In world cricket? नहीं सुबोध भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. रोहित शर्मा नहीं, मैं पता नहीं. वर्ल्ड क्रिकेट में इनसे ओपनर बहुत अच्छे हैं. फिलहाल मेरे हिसाब से उस्मान ख्वाजा वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ओपनर है, क्योंकि वो हर कंडीशन में कंसिस्टेंटली रन बना चुके हैं. रोहित शर्मा एक मैच में 100 मारते हैं, फिर 10 पारी तक वो 50 तक नहीं पहुंचते. ये मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा हूं, आप आंकड़े देख सकते हैं. मेरे हिसाब से रोहित शर्मा टेस्ट ओपनर विश्व में वो बहुत बहुत दूर है. ठीक ठाक है, हो सके इंडिया के बेस्ट ओपनर हो, बट विश्व क्रिकेट के वो बेस्ट ओपनर नहीं है. बहुत लोग इनसे आगे हैं. 100 says Nehra. पता नहीं who you're talking about. Anup is here. Jaiswal is a bright future. बिल्कुल. Every Indian batsman in the history of Indian cricket has been tested in Sena countries. Nothing new there. And let's hope that the application he showed will bring lots of laurels to the country. I still consider S. Dhawan century on debut was something different at that game.
शाहनवाज भाई देखो, जब कोई प्लेयर अपने डेब्यू पे 180 मारता है, नो डाउट, लेकिन क्योंकि मैंने वो सीरीज पूरा कवर किया था, वो सीरीज इंडिया 4-0 से हारी। इतिहास में पहली बार किसी ऑस्ट्रेलिया टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हराई। विकेट्स, मोहाली विकेट बहुत बहुत फ्लैट था। ऑस्ट्रेलिया की टीम थक चुकी थी, पक चुकी थी जब वो मैच हुआ था। यस, इट्स अ बिग थिंग, बट आई वुड नॉट रेट 100 on a flat track in Mohali against a very very tired Australian team in a series they were already down 3-0. मैं उस इनिंग्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा as I would give a 21-year-old scoring it overseas even against West Indies. And I'm telling you because I watched every ball of Shikhar Dhawan's 183. It might be the fastest, लेकिन कंडीशंस देखो, ऑस्ट्रेलिया की टीम थक चुकी थी और वो पाटा विकेट था मोहाली वाला। What do you see opening with Jaiswal when Rohit bids farewell from the current lot? I would go like to see Rituraj Gaikwad given a run. I think Gill should slowly move down the middle order. I think Abhimanyu Ishwaran, he's 27, 28, but he's ticked every box. I would like to see him give a chance because if you're not rewarding those who scored runs in domestic for India A in the zonals, then there's no real point. So Rohit will go in the next 2 years. I would like a slightly younger player, 24, 25, but फिलहाल Gaikwad के अलावा मुझे कुछ साफ साफ young option नजर नहीं आता. As far as Pant being captain, no. Let's not go there. That man has gone through a horrific, life-threatening accident. Whether he ever comes back the way we know him, I don't know. He might come back as a batsman. I don't know whether he'll come back as a keeper batsman. I hope he does. But right now, the last thing we should be doing is talking about Pant being a captain. The next captain is Shubman Gill. If Shreyas Iyer was around and fit, he'd be the next captain. Shubman Gill is the next captain, not Pant. Disappointed with Gill. I rooted for a century. बिल्कुल यार, उस track पर, especially after the ball had stopped doing too much, the hard yards had been played by the openers. Gill should have scored. Sir, Yashasvi Jaiswal can represent all the format. Bilkul, he's all format openers. I'm laughing on people saying Jaiswal is the next big thing. He scored runs against mediocre bowling of West Indies. Gill, big thing because he's different class. No, bilkul. You cannot laugh at what Yashasvi Jaiswal has done. 15 फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने 80 की एवरेज से, 80 की औसत से वो यहां पर आए हैं सुबोध। उन्होंने 15 फर्स्ट क्लास मैचेस में 9 सेंचुरी और केवल 2 शतक लगाए। यानी कि आपको जो पाथ, जो रास्ता आपको दिया गया है भारतीय टीम में आने के लिए, इस लड़के ने बहुतों से ज्यादा वो किया है। डबल सेंचुरी लगा चुके हैं फर्स्ट क्लास में, लिस्ट ए में डबल सेंचुरी लगा चुके हैं, इंडिया ए के लिए शतक लगा चुके हैं, ईरानी ट्रॉफी फाइनल में एक पारी में डबल सेंचुरी, दूसरी में सेंचुरी, आईपीएल में रन बना चुके हैं। तो जब आप ये करते हो तो आप में हट के बात है। अब आप इस बात पे नहीं हंस सकते हो कि बंदे ने वेस्ट इंडीज में ये किया। 17 प्लेयर, इंडिया के 300 तकरीबन प्लेयर्स के बीच केवल 17 प्लेयर्स ने टेस्ट सेंचुरी लगाया। ये सेंचुरी पाटा विकेट में नहीं आया जैसे कि पृथ्वी शॉ का आया था। मुश्किल कंडीशंस थी डे वन पे। हाँ बिल्कुल, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट टू फेस 350 बॉल्स, दैट इज अ बिग अचीवमेंट। और मेरा ये मानना नहीं है कि इस इनिंग्स के बेसिस पर कोई कह रहा है कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है। ये ऑलरेडी नेक्स्ट बिग थिंग है पिछले 2 साल से। तो मैं बिल्कुल गिल ने भी किया, लेकिन कल क्या किया? आप कह रहे हो कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग खराब है, तो शुभमन गिल ने केवल 6 रन क्यों बनाए? कहां गया उनका क्लास सुबोध? थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे दोस्त कमेंट करने से पहले। आई डोंट थिंक यू अंडरस्टूड, मे बी यू नॉट वॉच इनफ क्रिकेट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट विद शुभमन गिल। जस्ट माय व्यू। आपने कमेंट किया, मैंने आपको फ्रैंकली जवाब दे दिया। अगर आपको लगता है कि बॉलिंग मीडियोकर है, तो शुभमन गिल क्यों नहीं चले इस पे? हाउ मेनी विकेट्स fell in the first? How many wicket will fell down in first season? Achha, you mean first session? Yeah, the way it's going, unless Virat Kohli and Shubman Gill play bad shots, I don't think more than विराट कोहली का। मेरा ये मानना है कि जायसवाल तो पूरा सेशन खेलेंगे और 200 की तरफ पहुंचेंगे। विराट कोहली जैसे कि मैंने कहा था 36 तक पहुंच चुके हैं, पूरा उन्होंने भी झंडा गाड़ा है। आई थिंक मे बी 1 विकेट, मे बी विराट कोहली गेट्स आउट, बट नथिंग मोर देन दैट। लेफ्ट हैंडर्स हैव बीन रियली गुड ओपनर्स फॉर इंडिया रिसेंटली, फिंगर्स क्रॉस। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हमें एक लेफ्ट हैंडर की जरूरत थी और एक तो आ गया सामने। इन ओडीआई वर्ल्ड कप हु इज गुड एट नंबर 4, स्काई और श्रेयस अय्यर? हैंड्स डाउन श्रेयस अय्यर यार। स्काई की तो जगह नहीं बनती वनडेज में, he's got a terrible one day record. श्रेयस अय्यर बिल्कुल। एनी इनसाइड न्यूज व्हाट्स हैपनिंग इन पीसीबी? पता नहीं यार, छोड़ो फालतू लोग को यार, फालतू लोग के बारे में बात नहीं करते हैं। Pritam, I can understand the love Rohit gets, but I can't wrap my head around the captaincy charade.
Someone tweeted last time India was on visiting on Enrique, the score was 26 for 3 India. You mean the captaincy charade about him being captain, or I don't get your comment, Pritam? If you can just elaborate, I'll try and answer your question. Anup कह रहे, I think the right left combination at the top with the left hander and punt like Ishan. See, टेस्ट में आपको लेफ्ट हैंडर की जरूरत अगर चाहिए थी तो वो ऑप्शन ईशान किशन और पंत नहीं है, वो टेस्ट ओपनर्स नहीं है। आपको एक प्रोफेशनल ओपनर बाय ट्रेड चाहिए था। इस लड़के ने 21 साल की उम्र में सारे फॉर्मेट में बड़े बड़े रन, बड़े बड़े औसत के साथ, अच्छी स्ट्राइक के साथ इस बंदे ने यहां तक अपना नाम डाल दिया. He got 100 on debut. Like I said, he's going to face much tougher attacks. He's going to face four of the fastest bowlers when the team goes to South Africa in December. फिलहाल not just इस पारी के बेसिस पर, इनके पूरे डोमेस्टिक करियर के बेसिस पर मुझे लगता है कि इस लड़के के अंदर वो जिगरा है. लेकिन 5 साल पहले पृथ्वी शॉ भी ऐसे आए थे. पृथ्वी शॉ ने बहुत ही मीडियोकर बॉलिंग के सामने राजकोट जैसे देश के पाटा इस विकेट पर, फ्लैटेस्ट विकेट पर उन्होंने 134 वहां मारे और उसके बाद वो कभी उस मकाम की बैटिंग नहीं कर सके. ऑफ कोर्स ही गॉट इंजर्ड, अ टेरिबल इंजरी. तो लेट्स होप, जैसे कि मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया इस चैनल पर, लेट्स होप that Yashasvi Jaiswal does not go the Prithvi Shaw way, because the parallels between Shaw and Jaiswal are very, very similar, eerie in fact. West Indies need to be respected, still capable. यार शिखर सिंह, I gave this team a lot of hope. ये मैच खत्म है. ये मैच इंडिया शायद 200 रन से जीत जाएगी. दूसरा मैच अगर जो कंडीशंस, देखो ये कंडीशंस बहुत ही इंडिया के फेवर में गई है. डे वन से बॉल घूम रही है. भला कोई कोई वेस्ट इंडीज टीम जिनके पास कोई लायक स्पिनर नहीं है, वो इंडिया के हाथों ऐसी ट्रैक क्यों देगी? दे हैंड द मैच ओवर देम. आई थिंक वेस्ट इंडीज कुड स्टिल बाउंस बैक, बट इफ यू लूज दिस मैच, लाइक आई सेड, दे गोना लूज बाय 200 रन्स. बहुत बहुत मुश्किल होगा इस टीम को वापस आने के लिए. So वो कह रहे विराट कोहली really struggling against spin last couple years. I'm worried for him in World Cup because he struggles against spin. He does struggle, but I think his best format right now is still one day format. और वन डे फॉर्मेट के अंदर ना तो वो इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है जितने के टेस्ट मैच में है. बट लुक, विराट कोहली का स्पिन प्रॉब्लम्स आपको अंतरराष्ट्रीय T20 भी हरा चुके हैं, आपको टेस्ट मैच हरा चुके हैं. इट्स अ स्ट्रेंज वन बिकॉज अ मैन हु फॉर 5 years, 14 से लेकर 19 तक विराट कोहली का एवरेज 95 था वनडे में, वो किंग थे. और पिछले 4 साल से उनका एवरेज 28 है. तो कैसे वो 11 में है, मुझे इस बात से थोड़ी दिक्कत है. बट आई होप ही स्कोर्स अगेंस्ट स्पिन, नॉट जस्ट इन द वर्ल्ड कप बट आल्सो इन दिस मैच. रकीम कॉर्नवॉल अच्छी गेंद कर रहे हैं, इनको मारना मुश्किल है. जुमेल वोरक इनको मारना इतना आसान, काफी आसान है. आई जस्ट होप, विराट कोहली 36 तक पहुंच चुके हैं, काफी गेंदें खेल चुके हैं. I hope he can get a big 100 from here. What should be India's plan on day 3? Back for 2 sessions, and when the lead has got to about, अच्छा अभी लीड क्या है? अभी लीड है 160. India should get the lead to about 350. Sorry, their total to 350. Sorry, the lead to about 320, 350, and say good luck. Because कल दोस्तों, कल बॉल इतनी घूमने वाली है, अश्विन और जडेजा हो सके 1 या 1.5 सेशन के अंदर इस वेस्ट इंडीज टीम को आउट कर सकती है. सो बैट ऑन, गेट द लीड अबाउट 300. बिकॉज देखो, आपको बैट्समैन को फॉर्म में लाने की जरूरत है. विराट कोहली का 100 मारना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. रहाणे का रन मारना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. रहाणे को 18 महीने के लिए बाहर किया इस टीम ने, फिर वापस बुलाया उनको एक मैच की बेसिस पर, इनको वाइस कैप्टन बनाया. उनके ऊपर बहुत बहुत प्रेशर है अपनी जगह कायम करने की. सो whoever comes back, maybe the Rahane and Ishan Kishan, वो भी डेब्यू पे, वो भी रन्स चाहेंगे. So get the score, get the lead to 330, 350. About Rohit being a far better captain than VK. नहीं, Rohit Sharma is definitely not a better captain. I've been critical of Virat Kohli's captaincy on several terms, but he brought a certain energy, a certain vibe that this team needs. I think रोहित शर्मा, और ये मैं बहुत बार कह चुका हूं, आई थिंक रोहित शर्मा को मालूम पड़ गया है कि एक कॉर्पोरेट टूर्नामेंट में 5 बार टाइटल जीतना, जिस टीम में आप हिस्सा हो उस टीम, दे कैन बाय एनी प्लेयर यू वांट. To captain Mumbai Indians to 5 IPL titles is a world apart from captaining India. It's the toughest job in world cricket to lead India. We've seen. Again, don't go by the numbers. If you look at his numbers, India have won a lot of one days under him. They've won a lot of T20s under him. They got to the WC final under his captaincy for the second part. Lekin, you failed to qualify for the Asia Cup last year. That means you're not even the best team in Asia. Forget the rankings. Rankings आपको बताएंगे कि ये टीम नंबर 1 है T20 में.
घंटा, ये बहुत ही खराब T20 टीम है। वनडे में आप सिर्फ जीते हो घर पे। आई हैव नॉट सीन इनफ, क्या कहूं मैं, इनफ स्पार्क, इनफ फेथ ऑल्सो। व्हेन थिंग्स गो बैड, यू स्टार्ट टू सी रोहित शर्मा गेट फ्रस्ट्रेटेड, कैप फेंकते हैं, अबे यार, गाली बकते हैं। दिस शुडंट बी हैपनिंग, सो आई एम नॉट टू इम्प्रेस्ड बाय रोहित शर्मा's captaincy. Ronak Patel is back. Thank you for the super chat, Canadian currency man. Thank you, Ronak. Love you. Who do you think, who's the culprit we can't produce pacers like Wood? If Mukesh, Jaydev are our bowlers, then 350 for zero is confirmed in World Cup. A lot of things. Let's go back to the culture or the DNA of our country's cricket. Um, पाकिस्तान में इतने सालों से, सदियों से फास्ट बॉलर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनकी इनके डीएनए में फास्ट बॉलिंग है, राइट? ऑस्ट्रेलिया have had fast bowlers. So I'm taking you back. In a country, in a nation which has grown up seeing wonderful stroke mayors, a quartet of spin bowlers in the 70s. So you naturally get spinners and batsmen coming through. Simple सी बात है. To use that old ad term statement, जो दिखता है वो बिकता है, right? If you grow up watching Tendulkars and Lakshmans and Gangulis and Dravids, Azhars, Vishwanaths, Gavaskars, likely a certain generation will be drawn to becoming batsmen. यार इस देश में फास्ट बॉलर कौन बनेगा? हमारे पास तो कुल मिला के 3 तो फास्ट बॉलर है 40 साल में. This is an attitude some time ago. Then the wickets were not conducive. Something changed. Ishant Sharma 2.0, Zahir Khan 2.0, Irfan Pathan, Bumrah, Shami 2.0, Umesh Yadav, Mohammad Siraj. Suddenly, it changed because that generation probably started watching a bit more fast bowlers, and India में एक shift आया mentality में. थोड़ा aggression का, पैसे आए, थोड़े facilities बदलने लगे. Indian bowlers started learning. There was better coaching, right? So coaching personnel came. I think the 5 years of Virat Kohli and Rohit Sharma, Virat Kohli and Ravi Shastri as a captain coach combo, those 5 years were the golden period of India A tours. आजकल India A tour concept post COVID है ही नहीं. टीम कहाँ जाती है? बांग्लादेश. For 5 years, the India A team was going to England, they were going to South Africa, they were going to the West Indies, Australia, New Zealand. So you got these fast bowlers. A lot of factors came together. You see, bowlers became fitter, their diet improved, the IPL helped them become more aggressive, and then that stint, some of them went to play county cricket. Zahir Khan came back a new fast bowler after playing county cricket. Ishan Sharma came back a new player after playing county cricket. So it's this combination of attitude, better fitness, more jigra, and a lot of India A tour. Suddenly, India had 6, 7 fast bowlers who were doing very, very well. अब क्या है? Pace. आपने pace के बारे में बात करी. India will never have extreme pacers. There are many factors go into it. Why is Umran Malik the fastest bowler in India? He comes from a certain region where you were prone to be a bit more. Again, don't get me wrong here. वहाँ के जज्बात, वहाँ के sentiments. There's something going on in the area he comes from, right? He's sturdier. पहाड़ से आते हैं वो ज्यादा मीट खाते हैं. बहुत factors. ये मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ. It's proven. You need to have a certain diet. You need to have a certain DNA, a certain approach to life to become a better fast bowler. अब माफी चाहूंगा, जो थोड़े घास फूस खाने वाले बॉलर्स हैं वो इतने तेज नहीं बन पाएंगे, which has held back many Indians from crossing the final hurdle. You need lot of factors, Ronak, coming in. Mark Wood comes from Durham. It's up north. His family has had to live a harder life than many people. You see Harmison. Harmison came from the north. So look at where fast bowlers come from a geopolitical aspect. Look at their what their family stature in. And I'm not being disrespectful here, and I'm not trying to stoke any kind of emotions. I'm saying एक बेहतरीन रॉ फास्ट बॉलर का जो इतिहास है, उनकी अपब्रिंगिंग, ये सारे फैक्टर्स incorporate होते हैं. I hope my answer has made some sense to you. And again, I don't think we should expect a Mark Wood to come from here. Jaydev Unatkar was never quick. He's 30 plus. He's in this team because the BCCI and I believe Rahul Dravid want to reward the process, the hard work that comes into playing domestic cricket over 100 matches. Just like I feel Abhimanyu Ishwaran should also be given a chance. Okay, a lot of questions have come since I've gone on from that last one. Ashutosh Kere, what should Washington Sundar do to improve his off spin? Speak to Ashwin, talk to Ashwin, ask him about his variations. Washington Sundar is a very accurate but
very tidy bowler, but the ball doesn't spin. What can Ashwin tell him how to get the ball to move? If he does that, if the ball can move and turn a lot more than he's doing it right now, Washington Sundar, because look, I think he's 23. He could play a many, many years for India. Batting is he's a very good batsman. Is Jaiswal and Ruturaj future openers for India? I believe so. Do you think Indian batting failures against Murphy, Lyon, Kuhneman in last five tests influence West Indies to make this kind of pitch? It's possible because look, we all know कि इंडिया की बैटिंग के अंदर स्पिन के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स है, लेकिन when your batting is so weak, West Indies batting is actually worse than their bowling, right? So when you have the ability to collapse in two sessions and you don't have any top bowlers, why Roston Chase was dropped after some good numbers in the last 12 months, I don't know. Jomel Workin and Rakeem Cornwall are not going to run through teams. The only way either of these two spinners can get 5 wickets is if India start to go for 500 and they lose. India अगर 400 450 रन बनाती है, 500 रन बनाती है, तो इनके 5 विकेट होंगे. But you're only going to roll out a track with 8 spinners when you have quality spinners yourself and your batting is much better. This team, I don't see them lasting a session and a half, maximum 2 sessions on day 4 when the ball is really turning and Ashwin and Jadeja are bowling. अब रोहित शर्मा के लिए भी इजी हो गया खेलना बिकॉज लेफ्ट हैंडेड पार्टनर. पता नहीं कितना, पर हाँ हो सके कुछ 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 तो फर्क पड़ा हो. What happened in World Cup qualifiers is, अरे भाई वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को लेके मैं 3 वीडियो कर चुका हूं. लेट्स स्टिक टू टुडेस टॉपिक. इट्स जयसवाल एंड इंडिया वेस्ट इंडीज. जो रूट भी अभी स्पिन बॉलिंग करता है इन पिचेस पर, पता नहीं वेस्ट West Indies have been boring for many, many years. Even नई बात नहीं है. Why it seems Rohit Sharma will milk this century for a year. Now that's a good point. मानव ने अच्छी बात की है. Why does it seem like Rohit Sharma will milk this century for a year now? Because जब भी रोहित शर्मा सेंचुरी मारते हैं, खासकर घर के बाहर, तो अगले 10-12 पारी में वो 50 तक नहीं पहुंचते. इनके स्टैट्स बताते हैं. I hope Rohit gets more runs यार. India should declare the innings after 450 runs, otherwise there'll be nothing left. Yes, I agree, Satej. लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, विराट कोहली को 100 चाहिए, रहाणे को 100 चाहिए, ईशान किशन को 100 चाहिए, तो आई थिंक वो थोड़ी भूख आ जाएगी प्लेयर्स के अंदर. देखो, आप मैच हार सकते नहीं हो. आप 450 बनाइए, आप 450 को 500 तक लेके जाइए. आपका स्कोर है 312. आपने अगर 2 सेशन बैटिंग करी और जैसे ही वेस्ट इंडीज बॉलर्स थकते जाएंगे, आप 2 सेशन में आप 200 रन बना सकते हो. तो टी के आसपास डिक्लेयर करो. आपका टोटल 445 के आसपास, 450 के पास हो ही जाएगा. मे बी इवन 475 डिक्लेयर करो. उसके बाद कल लंच तक मैच खत्म. Tanmay Agarwal is around. The other trophy was a 3-team format, ABC. It was played by current. No, the Deodar Trophy was zonal for the longest time, for 3-4 years. No, about 5-6 years. The BCCI tried the ABC, the Duleep and the Deodar. I just don't think, based on the feedback of the captains, from what I've heard, people didn't like it. It was always a zonal for years, for decades. It was a zonal tournament, and I'm actually all for the zonal because you have to see what kind of players are coming out. So the India ABC and India Red Green, was it Red Challenge Trophy was? India Red, India Green, India Blue. That was for about 7-8 years. I'm very actually happy that they've gone back to the zonal format. अगर एशिया कप में भी 28 की एवरेज से खेलेंगे तो वो वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं. विराट कोहली की 28 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में 4 साल में. वनडे में इनके नंबर्स अभी भी बहुत अच्छे हैं डिस्पाइट नो 100. मैं बात कर रहा हूं कि 4 साल से टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का एवरेज 28 के आसपास है. वर्ल्ड कप तो खेलेंगे भाई. वो वर्ल्ड कप में 450 रन भी बनाएंगे विराट कोहली आसान से. वर्ल्ड कप में कोई क्वालिटी नहीं है. शाहनवाज पूछ रहे हैं जय भाई, ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब मैंने डब्ल्यूसी टिकट के लिए चेक नहीं किया और आपको तो आराम से पासेस मिल जाएंगे. नहीं, मुझे कोई ये गलत है मत पालिए. मुझे आज तक एक ही बार एक पास मिला है और वो भी आईपीएल के टाइम पे, क्योंकि मैंने एक डीवाई पाटिल स्टेडियम को के बारे में, वो किताब कहाँ है, डीवाई पाटिल स्टेडियम के बारे में मैंने 2010-11 में मैंने ये किताब लिखी थी कॉल फील्ड ऑफ ड्रीम्स. ये विजय पाटिल है, इनकी ही स्टेडियम है. ये बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड है. तो इस किताब को लिखने के बाद मुझे मात्र 2 पास मिले थे विजय पाटिल के ऑफिस से. मुंबई इंडियंस का एक आईपीएल. मुझे आज तक मुझे कोई पास नहीं मिला. हाँ, मुझे टिकट भी नहीं खरीदने पड़ते हैं क्योंकि मैं मीडिया से हूं. अगर मैं मीडिया अक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करूं और मैं उस बॉक्स में आता हूं मैं, तब मुझे टिकट्स मिलते हैं. लेकिन ये पासेस वाले और आराम से
मेरे दफ्तर में पिछले 15 साल से इतने एडमिन वाले, इतने इतने पैंट्री बॉयज, इतने सिक्योरिटी गार्ड्स, सर आपको तो पासेस बड़े आराम से मिलते होंगे। आज तक सच कह रहा हूं, मुझे एक ही बार पास मिला है, वो भी विजय पाटिल से 2011 आईपीएल के लिए, और ऊपर से मैं हूं नहीं पास मांगने वाला। चलिए, निहार ठक्कर, व्हाई बॉलर्स नर्चर बेस्ट अंडर अग्रेसिव है? व्हाई बॉलर्स नर्चर बेस्ट अंडर अग्रेसिव? ओके ओके, because fast, what is fast bowling? You cannot be calm, you cannot be silent, you cannot be studious as a fast bowler. Fast bowler होने के लिए आप में जिगरा होना चाहिए, आपके पिछवाड़े में आग होनी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप फास्ट बॉलर कैसे बनेंगे? लुक एट जेम्स एंडरसन, आजकल 40 ओवर में उनके अंदर ही ऑलवेज लुक्स ग्रम्पी। फास्ट बॉलर्स हैव टू बाय नेचर बी अ बिट अग्रेसिव व्हेन दे कम ऑन द फील्ड। अगर आपका कैप्टन थोड़े कॉम है, थोड़े चिल्ड आउट है, तो जाहिर सी बात है, लुक एट द फास्ट बॉलर्स। व्हाई डिड धोनी's team never have good fast bowlers? Because धोनी was just a bit too calm. विराट कोहली आए, ये सब किया, हालांकि ही क्रॉस द लाइन, पर इफ योर कैप्टन इज फायरिंग यू अप, विराट कोहली के आने के बाद से इंडिया ने लगातार 5 बॉलर खिलाए। उससे पहले क्या कभी आपने 5 बॉलर खिलाए? नहीं, एक आध मैच को छोड़ के। योर कैप्टन नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट फास्ट बॉलिंग इज। ही हैज टू अंडरस्टैंड कि भाई इस बॉलर को मुझे थोड़ा भड़काना पड़ेगा। आई थिंक विराट कोहली डिड दैट वेरी 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 वेल। मनमोहन ठाकुर, जेम्स, इंडिया स्लो नहीं खेला बेसबॉल के जमाने में। नहीं, देखो, बेसबॉल बेसबॉल एक एक समय के साथ हवा का रुख जो आता है, बेसबॉल चल रहा है, बेसबॉल चलता है पाटा विकेट्स पर। और ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम ने बेसबॉल की कोशिश नहीं करी। 1 महीने पहले, 3 हफ्ते पहले जब भी था, आप WTC फाइनल देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल पर। चितेश्वर पुजारा ने वाहियात शॉट खेल के, बेसबॉल शॉट खेल के वो आउट हुए। विराट कोहली दूसरी पारी में 49 पे थे, उन्होंने बेसबॉल शॉट खेल के अपना विकेट गवाया। रोहित शर्मा ने पहले ओवर अगेंस्ट नेथन लायन, उन्होंने स्वीप मारा। ये बेसबॉल नहीं है। तो इंडियन टीम को WTC फाइनल के बाद साफ मालूम पड़ा कि भाई ये बेसबॉल हम इस लायक नहीं है। बेसबॉल को पागल अंग्रेजों को खेले दो, ये भी एक हवा है, शायद ज्यादा टाइम तक नहीं चले। जितना दूर इंडियन टीम बेसबॉल से रहे, उतने ही इंडियन क्रिकेट की भलाई है। Harpreet Singh, why should India look to declare? We have 2 more days. Because traditionally, Indian teams don't want to bat on, bat on. You want to get some batsmen back into form. You also, if you can get a day and a half off in this busy schedule, I'm all for it. India, most likely, I think they will declare around 475, which I think they'll get to 475, 500, 500 by tea, unless at tea time, 2 new batsmen are approaching hundreds, then you might see them bat. But I, frankly, because I've watched enough cricket, I've never seen an Indian captain go on and bat for 2.5 days in such conditions. You get a chance to roll them over. You get a chance to get a day off, keep your players fresh. That's why Harpreet Singh, I think they'll play. Who wants to play 5 days when you have a chance to finish it off in 3.5? Simple सी बात। किरण भंडारी जुड़े हमारे साथ नेपाल से। After seeing this test match, maybe Ravi Shastri's 2-tier test format was right. Absolutely, you are right. शिखर सिंह हमारे साथ फिर भी जुड़े हैं, कह रहे हैं जय भाई, क्या T20 और आईपीएल ने इंडियन बैट्समैन की स्पिन प्लेइंग टेक्निक खराब की है? बस डीआरएस का खेल है ये सारा। डीआरएस का खेल भी है, पर आई थिंक मोर देन आईपीएल और T20, इट्स द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। इंडिया सालों से, जब मेरी आंखें खुली और मैं बचपन में मैंने ये खेल देखना शुरू किया था, तो हमें बताया गया था, हमने सुना, हमने पढ़ा, टीवी, रेडियो, बुक्स, फादर, अंकल्स, फ्रेंड्स, जो भी हमारे सीनियर्स थे, कि भैया इंडिया के बैट्समैन ना स्पिन के सबसे बेस्ट प्लेयर है। क्योंकि सालों से, 30, 40, 50 साल से अच्छे स्पिनर्स के सामने डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका मुकाबला हुआ करता था। जीआर विश्वनाथ वाज फेसिंग a lot of the great spinners in domestic cricket. At that time, टेस्ट मैच के बाद हमारे दिग्गज खिलाड़ी सीधा वापस आके अंतरराष्ट्रीय दौर से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके थे। अब वो जमाना बदल गया। अगर अश्विन, अगर कुंबले, खैर कुंबले के जमाने में नॉर्मल था, आप कोई भी पिछले 20 साल से कोई भी बेहतरीन इंडियन स्पिनर को उठा के देखिए, कितनी बार ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेले उस समय पर जब ये ड्रॉप हुए थे या ये रिटायरमेंट के स्टेज पे पहुंच चुके थे। तो जब जब आपके डोमेस्टिक स्टैंडर्ड में टॉप क्वालिटी स्पिन बॉलर्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं और टॉप प्लेयर्स नहीं खेल रहे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्पिन बॉलिंग गेम थोड़ी कमजोर होगी, राइट? हु इज द नेक्स्ट बिग स्पिनर कमिंग आउट ऑफ इंडियन क्रिकेट? नजर नहीं आता ना, ठीक है?
So when your batsmen are not getting a chance to play better spinners, and yes, you can talk about DRS at the top level, you can talk about T20 cricket making batsmen play more shots, but it comes down to quality spinners being produced in your domestic system. That's why I feel simple सी बात है, आप जब domestic cricket नहीं खेल रहे हो, आप जब अच्छे spinners नहीं खेल पा रहे हो, आपके आने वाले बैट्समैन कैसे बनेंगे स्पिन के अगेंस्ट? युवराज सिंह is a World Cup winner. Yuvraj Singh has got many hundreds in one days and Test cricket. Virat Kohli could not play. युवराज सिंह could not play spin very well. जब ब्रैड हॉग लेट 30s में थे, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इनको पिक किया. सुरेश रैना ने डेब्यू पे 100 मारा. इनका स्पिन गेम अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन गेम बहुत वीक था. तभी वो टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा टाइम तक नहीं खेल सके. Yes, Nihar, I'm very disappointed with the Indian women's team, but ठीक है, it wasn't all that bad. Those were tough conditions. Look, when bowlers are bowling 4 overs for like 16 odd runs, it's very tough. But again, they've done well. They have it's not all bad. But yes, हाँ, कल के मैच में वो थोड़ा मुझे काफी डिसअपॉइंट किया थर्ड ओडीआई. But ठीक है यार, I think the bowlers were good, and the series. What was the series? The series was, oh no, India won the series 2-1. So it's not all gloom and doom. Rohit Patel is back with another super chat. Thank you, my brother. I feel Bazball is a hoax. Look at the boundaries in the first two days. Australia have more boundaries than England. They just better rotate strike. See, Bazball is fun. I like it to an extent. It's making Test cricket more attractive in a time where बहुत लोग कह रहे हैं Test cricket boring है, ये है, फलाना ढिमकाना. वो ठीक है. Bazball is trying to make cricket a bit more entertaining, and let's face it, it's been pretty successful so far until this series. The same Bazball with a bit of toning down, it did win them the third test. But yes, why I see it could be as a hoax is because Bazball is entirely 100% Ronak. It is dependent on the tracks. Bazball works on flatter tracks. The moment it's a green top, there's cloud cover, the ball is swinging, Bazball does not work. If your Bazball approach is entirely based on a gambling, because Brendan McCullum, he likes to gamble, he has a horse farm, he's a man who he's a maverick. That maverick ballsy attitude equally has to be working with the kind of tracks you get. And if England are giving flat tracks like Lords, like Edgbaston, and they're still losing, that's why I feel it's slightly overrated. Good question. Our next test series South Africa will be a great challenge for Gill. बिल्कुल. 2013 में विराट कोहली ने 100 मारा, पुजारा ने 100 मारा, but again that series was also not won. More batting will give Indian batters match practice. Wouldn't that be better? I get where you're coming from, but having seen these Indian teams up close, having covered so many of their net sessions, inside they feel भैया अगर हमें एक दिन मिल सकता है ना छुट्टी का ले लो. They know they cannot lose this match. They probably want to wrap it up. They also have to play one more test match. I get your point, but I know कि ये होगा नहीं because I know how these guys think. Alcaraz seems Alcaraz कौन है? Athanaze looks good. Yes, looks good. सर न्यूज में आ रही है कि बुमराह की रिकवरी हो गई है वर्ल्ड कप एशिया कप के लिए. नहीं, इट्स नॉट कंफर्म्ड. अभी सूत्रों के अनुसार मेरी 4 दिन बात हुई, अभी भी वो पूरी तरह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं. एनसीए में बॉलिंग कर रहे हैं बट वो बहुत दूर है मैच फिटनेस से. नहीं है, ये खबर ट्रू नहीं है. ओके लास्ट. Oh my gosh, what are we up to? 43 minutes. Okay. Last question. Toto, I'm fine. How are you? Good to see you. Badhiya. Hope you're doing well. आप कैसे हो? Pujara, Sarfraz, Sky missed opportunity in Duleep Trophy final. Absolutely, especially Sarfaraz. Very poor. If day 3 win, then Rohit play next week is a go to party. Rohit Sharma will chill. He'll put his feet up. He'll probably watch some movies, play some PS4, put out some reels. ठीक है, बनता है. Chali, I've got to go. Last question. Do you think Pant and Bumrah might be rushed? Pant is not playing until next year. Pant is a good 10 months away from playing. So World Cup this year he's gone. Bumrah, yes, Bumrah will be rushed. I can tell you on authority, Bumrah will be rushed. He'll be rushed into the Asia Cup in Sri Lanka. और ये बहुत बड़ी भूल होगी. प्लीज मेरी बात मानिए, बुरा ना मानिए. बुमराह को वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए. इट्स अ बिग रिस्क. देयर इज नो पॉइंट. स्क्वाड में डाल भी दिया, एक मैच खेल लिया, खुदा ना खास्ता 2 मैच में चोट लग गई, आपकी पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी. एनीवेज,
I have to go. It's 45 minutes. Thank you all for commenting. Ronak Patel, thank you for your 2 super chats. Love you all. अगर आपका सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो माफी चाहूंगा. बहुत बहुत सवाल आए. कुछ सवाल का जवाब काफी लंबे गए. Thank you. Do watch my other video. I put out a 5 minute recorded video 2 hours ago on yesterday's match. I've compared. I've taken the issue of Shaw versus Jaiswal. I've compared their tracks, and I left it to you, the fan, to decide which one you think will have a better future. Love you all. Have a great Friday. Have a great evening. मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द. Take care. Bye bye. जय हिंद.